Today we'll talk about the induced mutation. What is induced mutation? In the previous lecture we discussed about what is mutation, what is spontaneous mutation. Spontaneous mutation is that mutation which arises without the external environmental factors. It arises due to the internal causes. Maybe there is an error in the replication or error in DNA repair. That is what is called as spontaneous mutation. It arises naturally. Then we have another type of mutation that is called as induced mutation. Induced mutation ये वो mutation होती है which arises due to the external environmental factors. जो when the mutation arises due to the external, this induced mutation arises due to external environmental factors. And we have term that is mutagens. Mutagens ये वो agents होते हैं. These are the mutagens are those agents, whether they are physical agents, chemical agents or biological agents, which disrupt the structure of DNA and cause mutation. So mutagens are agents which cause mutation. They may be biological agents, they may be physical agents, they may be chemical agents which are known to alter the structure of the DNA and cause mutation. This, for the first time, it was Müller. For the first time, Müller used X-rays to induce mutations in Drosophila melanogaster. And this Müller is known as the father of actinobiology. Father of actinobiology. Actinobiology. That means, what is actinobiology? That is the effect of radiations on the living organisms. So we have this Müller was the first person who used X-rays to induce mutations in the Drosophila. And this Müller, when he used X-rays to induce mutations in the Drosophila, he found that the rate of the mutation was found to be 150 times greater than the spontaneous mutation. And this rate of induced mutation which is caused by the X-rays was found to be 150 times greater than spontaneous mutation. So we have three types of mutagens. One is biological mutagens, biological agents, physical agents, and chemical agents. We'll discuss one by one. So we have biological. We'll discuss mutagens. Mutagens are agents that alter the structure of the DNA, and they are responsible for causing the mutation. So we have biological agents. Biological agents which are responsible for causing the mutation, they can be viruses, they can be bacteria, and they can be transposons. See, viruses, as we know that viruses have a genome and protein code. It has been found that these viruses, they introduce their DNA into the genome of the host cell. And जब ये जो viruses होते हैं, ये क्या करते हैं, ये अपना जो DNA होता है उनका, वो introduce करते हैं into the genome of the host cell. उसके बाद इसकी वजह से जो functioning of the genes or
जो स्ट्रक्चर ऑफ द जीन्स एंड फंक्शनिंग ऑफ द जीन्स जो वो डिसरप्ट हो जाता है, अल्टीमेटली उसकी वजह से म्यूटेशन आ जाती है. सो दिस वाज रिगार्डिंग द वायरस. उसके बाद बैक्टीरिया जो है, दे आर ऑल्सो नोन टू कॉज म्यूटेशन इन द होस्ट सेल. देन वी हैव गॉट ट्रांसपोजॉन्स. ट्रांसपोजॉन्स, these viruses जो है, viruses, एक वायरस है which called as Ross sarcoma virus. Ross sarcoma virus. This Ross sarcoma virus, it is known to cause cancer. As I told you that these viruses, they introduce their DNA into the genome of the host cell, and this results in the change in the structure of the genes and function of the genes, and ultimately results in the mutation. This was regarding the viruses, and same is the case with the bacteria, are also known to cause mutation. Then we have got transposons. Transposons. Transposons, these transposons, they are also known as jumping genes. Transposon is also known as jumping genes. These are also called transposable elements. These transposons, they move from one chromosome site to the another, and as a result of this, they change their position because of the movement from one chromosome site to the another site, and as a result of that, this disrupts the gene function and ultimately causes the mutation. These regarding the transposons, remember that these transposons, they are known as jumping genes. They were first discovered by Barbara McClintock. And he was basically this lady. This Barbara McClintock. She was working on the pigmentation pattern of maize kernels. He was working on pigmentation pattern of maize, mosaic pigmentation pattern in maize kernels, and there she found these jumping genes, and these jumping genes they are flanked by short inverted repeats. They are flanked by short inverted repeats. These ये jumping genes जो है transposons या transposable elements, इनके sides में short inverted repeats होते हैं, and ये transposons move करते हैं from one site of the chromosome to the another site. So these transposons are also known to disrupt the function of the genes and cause mutation. Then we have got, these are biological agents. Then we have got another type, that is we have physical agents. Physical agents which disrupt the structure of the genes and which alter the structure of the genes and cause mutation. These physical agents can be ultraviolet, they can be temperature, they can be ultraviolet radiations and ionizing radiations. अब temperature, regarding the temperature, it has been found जब increase हो जाता है temperature, तो rate of mutation जो है वो increase हो जाते हैं, and there is a relation Q10 is equal to 5. That means rise in 10 degree temperature, rise in 10 degree Celsius temperature, increase the rate of mutation by 5 times. That means 10 degree Celsius rise in temperature increases the
the rate of mutation by 5 times. The rate of mutation by 5 times. It increases the rate of mutation by 5 times. So we say that increase in temperature increase the rate of mutation. Increase in temperature increase the rate of mutation. Actually, when there is a increase in temperature and the temperature raises, it has been found that it breaks the hydrogen bond which exists between the two strands of the DNA, and ultimately this changes the structure of the DNA, alters the structure of the DNA, and causes mutation. However, in case of rice, low temperature has also been found to induce mutation in rice. It has been found in low temperature increase the rate of the mutation in rice, in paddy. And then we have got another, that is we have, this was temperature. Then we have second one, we have ultraviolet radiation, UV rays. The most drastic effect of the ultraviolet rays is that they cause thymine dimers. These ultraviolet radiations, they affect the DNA. They affect the DNA by causing the thymine dimers. How these thymine dimers are formed? So, for example, we have this particular sequence. We have GCTATA. How these are ultraviolet rays. What they cause? They cause the thymine dimers. These are thymine dimers. That is, we show it like this. These are thymine dimers. And these thymine dimers, how these are formed? These thymine dimers are formed when the DNA is exposed to the ultraviolet rays. These are ultraviolet rays, and these thymine residues, the adjacent thymine residues, they form covalent linkage and result in the formation of the thymine dimers. These thymine dimers, they disrupt what? DNA replication of DNA and transcription, and ultimately result in the mutation. For DNA, they disrupt DNA replication and transcription and result in mutation. So we know that these ultraviolet rays, they affect the DNA by producing the thymine dimers. These thymine dimers are produced when the adjacent thymine residues are covalently linked by the exposure to the X-rays, because of the exposure to the ultraviolet rays. When the DNA is exposed to the ultraviolet rays, thymine dimers are formed, and these are formed by the covalent linkage of adjacent thymine dimers in the DNA. So this was an important point regarding how these ultraviolet rays are affecting, how they are causing the mutation. Then we have another important thing, that is ionizing radiations. We have ionizing radiations. These ionizing radiations are those radiations which can remove the electrons from the atoms, and these atoms are the important constituents of the
लिविंग सिस्टम्स। जो ये आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है ये रिमूव करते हैं। वी नो दैट कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एटम्स का होता है, एटम्स फिर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, लिविंग सिस्टम्स के। ये आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है वो रिमूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम द एटम्स, और वो एटम्स जो एक इम्पॉर्टेंट कॉर्नरस्टोन बनाते हैं, लिविंग मॉलिक्यूलर कॉर्नरस्टोन बनाते हैं लिविंग सिस्टम्स का। तो उसकी वजह से जो म्यूटेशन आ सकती है, देख लीजिए आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है ये दो तरीके के असर डाल सकते हैं। वन इज डायरेक्ट damage. Ionizing radiations can cause direct damage to DNA and indirect damage to DNA. अब आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है वो किस तरह म्यूटेशन कर सकते हैं, उनका जो रिलेशन है डीएनए के साथ, वो डायरेक्ट डैमेज भी कर सकते हैं डीएनए को, या इनडायरेक्ट डैमेज कर सकते हैं डीएनए को। अब डायरेक्ट डैमेज में वो क्या करते हैं, ये आयोनाइजिंग रेडिएशंस दे रिजल्ट इन सिंगल स्ट्रैंडेड निक्स एंड डबल स्ट्रैंडेड निक्स। ये डीएनए में ब्रेक्स काज करते हैं। सो सिंगल डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स करते हैं, या डबल स्ट्रैंडेड निक्स इन डीएनए, या सिंगल स्ट्रैंडेड निक्स डीएनए में। जो डीएनए है उसमें फॉर एग्जांपल दिस इज डीएनए और दिस इज सिंपली सिंगल स्ट्रैंडेड निक। अगर यहां पर दिस इज डबल स्ट्रैंडेड nick, double stranded break in the DNA, this is single stranded break in the DNA, this is the direct damage to the DNA। और आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है वो इनडायरेक्ट डैमेज भी कॉज करते हैं, वो फ्री रेडिकल्स बनाते हैं। फ्री रेडिकल्स जो है वो ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव स्पीशीज, केमिकल स्पीशीज होते हैं, और ये जो मॉलिक्यूल्स के साथ या एटम्स के साथ वो रिएक्ट करते हैं, और जिसकी वजह से जो ये मॉलिक्यूल्स जो है उनका जो स्ट्रक्चर जो है वो ऑल्टर हो जाता है। सो फ्री रेडिकल्स और रिएक्टिव केमिकल स्पीशीज, और कभी कभार रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज भी बनाते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज फॉर एग्जांपल O2- या हाइड्रोक्सिल आयन OH+ या हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 ये फॉर्म करते हैं। और ये जो है these free radicals are highly reactive chemical species or reactive oxygen species, they DNA damage करते हैं, और when there is the damage in the DNA it ultimately results in the mutation. So we can say that we have induced mutation. Before winding up, I will just recapitulate. We have studied what is the induced mutation. Induced mutation is that type of mutation which is caused due to the external environmental factors. और जो एजेंट्स, जो सब्सटेंसेस म्यूटेशन कॉज करते हैं, जो ऑल्टर करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर को, उनको हम म्यूटेशंस बोलते हैं। ये फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं, उनको म्यूटेशंस बोलते हैं। और फॉर द फर्स्ट टाइम जो म्यूलर उसने यूज किए एक्सरेज टू इंड्यूस म्यूटेशन इन द ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, और ये देखा गया कि द रेट ऑफ म्यूटेशन वाज फाउंड टू बी 150 टाइम्स ग्रेटर दैन दैट ऑफ द स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। उसके बाद that is why this Müller जो है he is known as the father of actinobiology, that is effect of radiations on the living organisms. Then we have different types of mutation. We have biological agents, we have chemical agents, then we have physical agents which can act as a mutagens. Regarding the biological agents, we have viruses, we have bacteria, we have transposons. Basically these virus and bacteria, they hijack the जेनेटिक मशीनरी ऑफ द होस्ट, और जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर ऑफ द जीन एंड फंक्शन ऑफ द जीन वो डिसरप्ट होती है, और अल्टीमेटली म्यूटेशन हो जाते हैं जीन में। और रिगार्डिंग द ये वायरस क्या, ये अपना जो डीएनए जो है वो होस्ट जीनोम के साथ
इंसर्ट करते हैं और अल्टीमेटली उसकी जो जेनेटिक फंक्शन डिसरप्ट हो जाती है होस्ट जीन की। रिगार्डिंग द ट्रांसपोजॉन जो है उनको जंपिंग जीन्स बोलते हैं, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स बोलते हैं। ये मूव करते हैं फ्रॉम वन क्रोमोसोम साइट टू द अनदर क्रोमोसोम साइट एंड कॉज द म्यूटेशन। इनको पहली बार जो है डिस्कवर किया बारबरा मैकलिंटॉक ने, और उन्होंने इनको जो मोज़ेक पिगमेंटेशन होती है मेज कार्नल्स में, जब वो एनालाइज कर रही थी तो उस दौरान उसने इन जंपिंग जीन्स को डिस्कवर किया। रिगार्डिंग दीज जंपिंग जीन्स आर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, जिनको ट्रांसपोजॉन्स भी बोलते हैं, उनमें यार फ्लैंक्ड में उनके साइड्स में शॉर्ट इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं और ये फिर मूव करते हैं फ्रॉम वन साइड टू द अनदर साइड क्रोमोसोम में। देन रिगार्डिंग दीज फिजिकल एजेंट्स के बारे में हमने टेम्परेचर फिजिकल एजेंट है या अल्ट्रावायलेट रेज है। देन वी हैव अनदर आयोनाइजिंग रेडिएशंस। जो टेम्परेचर जो है उसकी वजह से इंक्रीज इन टेम्परेचर वो रेट ऑफ म्यूटेशन इंक्रीज करता है। ये देखा गया है कि क्यों देयर इज अ रिलेशन कि अगर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर हो जाएगा, रेट ऑफ म्यूटेशन बढ़ जाएगी 5 टाइम्स, रेट ऑफ म्यूटेशन इंक्रीज हो जाएगी। दिस टेम्परेचर एक्चुअली टेम्परेचर ब्रेक करता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए, और जिसकी वजह से डिसरप्ट हो जाता है स्ट्रक्चर डीएनए। अल्टीमेटली द फंक्शन ऑफ डीएनए जो है फंक्शन ऑफ डीएनए, एक्सप्रेशन ऑफ डीएनए वो ऑल्टर हो जाता है और दिस कॉज द म्यूटेशन। देन वी हैव गॉट अनदर टाइप अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज का सबसे ज़्यादा ड्रास्टिक इफेक्ट यह है कि वो थायमिन डिमर्स बनाते हैं। थायमिन डिमर्स किस तरह बनते हैं? जो एडजेसेंट थायमिन रेजिड्यूज होते हैं वो लिंक हो जाते हैं बाय मीन्स ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड, और फिर वो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में एक बाधा बनते हैं, जिसकी वजह से म्यूटेशन अराइज हो जाती है। देन वी हैव आयनाइजिंग रेडिएशंस। आयनाइजिंग रेडिएशंस ये वो रेडिएशन जो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं फ्रॉम द एटम्स। वो एटम्स एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट बनाते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग सिस्टम्स का। आयनाइजिंग रेडिएशंस का 2 प्रकार का उनका असर होता है। वन इज वो डायरेक्ट डैमेज कर सकते हैं डीएनए को, या इनडायरेक्ट डैमेज। डायरेक्ट डैमेज में वो निक्स बनाते हैं, ब्रेक करते हैं, सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक भी कर सकते हैं डीएनए में, या डबल स्ट्रैंड ब्रेक भी कर सकते हैं। और कभी कभार वो फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल्स हाईली रिएक्टिव केमिकल स्पीशीज होते हैं, वो जल्दी जल्दी रिएक्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स के साथ, क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इन फ्री रेडिकल्स में, और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज भी बनते हैं, जिसकी वजह से जो डीएनए जो है उसको डैमेज हो जाता है। देन वी हैव बीन फाउंड, हमें पता है कि जो रेडिएशंस की वजह से, दिस रेडिएशंस की वजह से जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो गिरा गए इन जापान, हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो वहाँ पर देखा गया है कि वहाँ पर रेडिएशन जो है वो वहाँ पर पैदा हो गई, जिसकी वजह से वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म में लीथल म्यूटेशन आ गई, लीथल म्यूटेशन। सो द न्यूक्लियर बॉम्ब्स व्हिच वर ड्रॉप्ड on Hiroshima and Nagasaki in Japan, they have caused lethal serious mutations in the living organisms. This was the impact of the radiations. This was we can say that the effect of the radiations on the living organisms. That was most evidently explained by the use of nuclear bombs in the Hiroshima and Nagasaki, which have caused lethal mutations in the living systems. In the next lecture, we are going to discuss, we have discussed biological agents, we have discussed physical agents. In the next lecture, we will discuss about the chemical agents. What are the chemical agents which are responsible for acting as the mutagens for causing the mutation? Thanks.